हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पीआईबी करंट अफेयर्स। पीआईबी करंट अफेयर्स की हमारी जो सीरीज है उसका आज हम पार्ट 5 कवर करेंगे। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लास्ट 6 मंथ पीआईबी करंट अफेयर्स की हमारी ये सीरीज है और इसका आज लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 5 हम कवर करेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज होंगे विद इंपॉर्टेंट कंटेंट विद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो करंट अफेयर्स हैं उसी पे बेस्ड कैसे स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज बन सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाने के चांसेस हैं, वो सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है पीआईबी करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए, बैंक प्रमोशन एग्जाम्स के लिए, आरआरबी, जीओ, आरबीआई, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पीआईबी करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ बाइलिंगुअल ये क्लास रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको कंटेंट मिल जाएगा। जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है वो उस लैंग्वेज में कंटेंट को इजीली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस चाहे एमसीक्यूज हो, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज हो या सिंपल एमसीक्यूज हो, कैसे भी हो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। तो पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे अपनी आज की इस क्लास में। लास्ट 6 मंथ पीआईबी करंट अफेयर्स की सीरीज हमारी शुरू हुई है, जिसका आज हम लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 5 कवर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है आपके बैंक प्रमोशन एग्जाम्स के लिए या आरआरबी जीबीओ के लिए ये पीआईबी सीरीज लास्ट 6 मंथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप एक हाइप जरूर दीजिएगा और अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट 11 मंथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्लास नहीं देखा है तो ये क्लास में जाकर जरूर देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जनवरी टू नवंबर लास्ट 11 मंथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, टोटल हमने इसमें 14 टॉपिक कवर किए हैं, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अलग अलग टॉपिक के साथ कवर की गई है, लाइक एसबीआई न्यूज, इंश्योरेंस सेक्टर न्यूज, अपॉइंटमेंट्स इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर। इस तरह से हमने काफी 14 टॉपिक के साथ लास्ट 11 मंथ्स का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का अपना एक क्लास कवर किया है, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। विद इंपॉर्टेंट कंटेंट एमसीक्यूज फॉर्म में हमने पूरा क्लास कवर किया है, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए, काफी हेल्पफुल है। अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो पीडीएफ के रिगार्डिंग आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लास्ट 11 मंथ का आरबीआई सर्कुलर भी हमने कवर किया है, जनवरी टू नवंबर लास्ट 11 मंथ आरबीआई सर्कुलर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में ये क्लास कवर किया गया है। अगर आपको स्पेसिफिक किसी भी क्लास का स्पेसिफिक इंग्लिश में ही कंटेंट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सिर्फ इंग्लिश की लैंग्वेज में ही पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ परचेस करने के रिगार्डिंग व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको मेंशन है हर प्रेजेंटेशन के साथ। अगर आपको कोई भी क्लास अच्छी लगे तो एक हाइप जरूर दीजिए, अदर स्टूडेंट्स को भी चैनल का नाम जरूर बताइए। और आप लोग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इन सभी का लिंक आपको दिए गए हैं। तो पीआईबी करंट अफेयर्स की हमारी लास्ट 6 मंथ पीआईबी करंट अफेयर्स की हमारी ये सीरीज है, जिसका आज हम पार्ट 5 कवर करेंगे। और कुछ भी आपको डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, आप लोग मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पीआईबी करंट अफेयर्स पार्ट 5। आज हमारी फर्स्ट पीआईबी न्यूज क्या है देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक साइन $800 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये है हमारी न्यूज, इसको हम कवर करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स के साथ, और इसी पे बेस्ड हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सेम कंटेंट सेम न्यूज आपको हिंदी में मिल जाएगी, अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये है हमारी न्यूज। Government of India ADB signed $800 million loan agreement for key development projects. First point is the Government of India and the ADB Asian Development Bank have signed loan agreements exceeding $800 million along with the $1 million technical assistance TA grant to support major development projects across Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat and Assam. Second point is the agreements was signed under the guidance of the Department of Economic Affairs DEA, with Shri Saurabh Singh, Deputy Secretary DEA, representing the Government of India, and Mr. Mio Oka, Country Director ADB India Mission, signing on behalf of ADB. ठीक है, important key loan components. First is Maharashtra. Maharashtra Power Distribution Enhancement Program for Agricultural Solarization. Loan amount $500 million. Objective: modernize rural power distribution, integrate renewable energy, and provide reliable daytime solar electricity for irrigation. Targets: daytime solar power for 90,000 agricultural consumers by 2028.
upgradations of substations, transformer, HT obligated lines, deployment of 500 megawatt battery storage. Second is Madhya Pradesh, Indore Metro Rail Project. Loan amount is $190.6 million. Scope constructions of an 8.62 kilometer underground metro line with 7 stations links density areas with the airport. Benefits multimodal integration with buses, feeder services, improved access to institutions and markets. Next, implementation. Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited. Expected operations January 2030. Third one is Gujarat. Gujarat Skill Development Program. Loan amount $109.97 million. Objective: upgrade workforce skills for high growth industries including logistics, automotive, IT, manufacturing, renewable energy, healthcare and agri-tech. Implementation: labor skill development and employment department with Kausalya the Skill University KSU. Key features: upgrade 11 mega ITIs, establish centers for excellence, industry driven curriculum and hub and spoke model. Fourth one is Assam SWIFT project, technical assistance grant amount $1 million TA. Purpose: support implementation of the sustainable wetland and integrated fisheries transformation SWIFT. Okay, project to enhance wetland ecosystem and fisheries in Assam. Next point is these agreements strengthen India's infrastructure, renewable energy, metro connectivity and skill development ecosystem, reinforcing long-term ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, तो ये सारे ही जो पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं अपनी PIB Current Affairs. Government of India ADB signed $800 million लोन एग्रीमेंट्स फॉर की डेवलपमेंट्स. ये सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस किए हैं. इसी पे बेस्ड आपके स्टेटमेंट बेस्ड MCQs होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बन सकते हैं इस न्यूज पे स्टेटमेंट बेस्ड MCQs. उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप सेम न्यूज जो है उसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं. सारे पॉइंट्स के साथ आपको सेम पॉइंट्स के साथ आपको हिंदी में भी कवर किया गया है, तो आप देख सकते हैं. ठीक है, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप वीडियो को पॉज करके ये PDF परचेस करके जैसा सुटेबल हो सेम कंटेंट आप देख सकते हैं. हम चलेंगे इसके क्वेश्चंस पे, किस तरह से क्वेश्चंस बन सकता है. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिया है मैच द ADB लोन अमाउंट विद द करेक्ट प्रोजेक्ट पर्पस. ठीक है, तो आपको कॉलम ए दिया है एंड कॉलम बी दिया है. इस तरह से एग्जाम्स में दिया होगा, क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में आपका लोन और ग्रांट अमाउंट है और सेकंड में है आपका पर्पस ऑफ लोन. क्या पर्पस है लोन का, आपको मैच करना है कि किसके साथ किसका मैच होगा. ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं ABCD. द करेक्ट मैचिंग कौन सा रहेगा. ठीक है, करेक्ट मैचिंग कौन सा रहेगा ये आपसे पूछा गया है. तो ये है आपका फर्स्ट $500 million. $500 million इनमें से किसके से दिया गया है ये आपको देखना है. $500 million एग्रीकल्चर सोलराइजेशन एंड रूरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडर्नाइजेशन, जो हमने प्रीवियस अपना कवर किया था. ठीक है, किया था हमने, यहाँ पर अपना क्या कवर किया था वो हमने देखिए. ये है $500 million. इसी तरह से इसी पे बेस्ड आपके MCQs आएंगे, एग्रीकल्चर सोलराइजेशन. ओके, तो ये ही हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, तो ये मैच करेगा A2 के साथ. सेकेंड वन इज $190.6 million. ऑप्शन बी किसके साथ मैच करेगा, ये इंदौर मेट्रो 8.62 किलोमीटर अंडरग्राउंड लाइन विद 7 स्टेशंस. ओके, थर्ड इज $109.97 million. किसके साथ मैच करेगा, ये स्किल अपग्रेड इन लॉजिस्टिक, IT, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर एक्सेट्रा. ओके, last one is D. $1 million is for D. SWIFT project, wetland and fisheries enhancement. तो क्या हो जाएगा, A का 2 ऑप्शन D, A का 2, B का 1 and C3 and D4. ये सारे ही मैच कर रहे हैं. ठीक है, D4 C3 A के 2 के साथ और B का 1 के साथ. तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन D. ठीक है, इस तरह से आपके मैचिंग आएंगे, आप मैच कर सकते हैं. ठीक है, अब हमें नेक्स्ट दिया है मैचेस के लिए मैच द स्टेट्स विद द कॉरेस्पॉन्डिंग लोन सपोर्टेड प्रोजेक्ट. इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे. तो ये हमने लोन जो है वो मैच करना है. ठीक है, स्टेट कॉलम ए कॉलम बी 2 कॉलम दिए हैं. फर्स्ट कॉलम में है स्टेट एंड सेकेंड कॉलम में है आपका प्रोजेक्ट पर्पस. ठीक है, फर्स्ट महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र किस किस क्या है? महाराष्ट्र का पावर डिस्ट्रीब्यूशन एनहेंसमेंट एंड एग्रीकल्चर सोलराइजेशन। सेकेंड वन इज मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर कनेक्टिंग सिटी एरियाज टू एयरपोर्ट। थर्ड वन इज गुजरात, गुजरात स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेड बाय केएसयू, जो हमने डिस्कस किया था अभी, ठीक है। असम, असम स्विफ्ट प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A3B4C1D2। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप इस तरह से मैच कर सकते हैं कि ए किसके साथ मैच है? 3 के साथ, बी किसके साथ मैच है? यहाँ पे 4 के साथ, और सी 1 एंड डी 2। ओके, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको मैच करना है। इसके बाद चलेंगे स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज किस तरह से बनते हैं, और हमने डिस्कस किया है लास्ट में आंसर। तो आपको दी गई होंगी यहाँ पे 3 स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द, किसके रिगार्डिंग दिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी लोन एग्रीमेंट्स जो है, इसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट्स दी हैं। ओके, तो ये 3 स्टेटमेंट दी हैं और पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है तीनों स्टेटमेंट में से। तीनों स्टेटमेंट में करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है? ये दिया गया है द फर्स्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द 3 लोन एग्रीमेंट साइंड एक्सीड्स $800 million इज अ करेक्ट। ओके, second one, the agreements include a technical assistance grant of $1 million for a project in Gujarat is a incorrect। तो ये क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज टीए ग्रांट इज फॉर द स्विफ्ट प्रोजेक्ट इन असम। यहाँ पे डिस्कस भी किया, आपको समझाया भी एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। थर्ड वन इज द लोन साइनिंग वाज कैरीड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डीईए इज द करेक्ट। राइट आंसर 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से ये डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज है हमारा। विद रेफरेंस टू महाराष्ट्र पावर डिस्ट्रीब्यूशन एनहेंसमेंट प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें 3 स्टेटमेंट दी है, पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो ठीक है, तो यहाँ पे आंसर भी है कि साथ में मेंशन। द प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय अ $500 million ADB लोन इज अ करेक्ट, यस इट्स अ करेक्ट। Second one is it aims to provide reliable daytime solar electricity to agricultural consumers is the correct. Third one is which program targets providing daytime power to at least 90,000 farmers by 2030? It's a incorrect statement. Okay, 1 and 2 only is the right answer of this question, option A. थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, द टारगेट ईयर इज 2028 नॉट 2030। ये हमने डिस्कस किया था अभी, ठीक है, अपने कंटेंट में। इसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन बनेगा वो देख लेते हैं। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है, उसके रिगार्डिंग आपने ये 3 स्टेटमेंट्स बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट को हम लेंगे, इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन, ठीक है। The Japanese yen denominated loan for the project is equivalent to $190.6 million is a correct statement. Second one, the loan will support construction of an 8.62 kilometer underground metro line with 7 station is a correct, yeah, it's a correct statement. Third one is the project is expected to be operational by 2028. It's a incorrect statement. Right answer, what is the right answer? Option A, 1 and 2 only is the correct answer of this question, and statement 3 is incorrect because operations expected by January 2030. So it's a 2028, it's a wrong, it's a incorrect. Right answer 1 and 2 statement only is the correct statement, ठीक है। अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। नेक्स्ट पीआईबी करंट अफेयर्स क्या है? हम Government, RBI and NPCI intensify measures to promote digital payments and strengthen financial inclusion. It's a second PIB current affairs. So इस पे बेस्ड हम कुछ important points discuss करेंगे। The Government of India, Reserve Bank of India and National Payment Corporation of India (NPCI) have undertaken multiple initiatives to deepen digital payments and enhance transparency in the cooperative and microfinance sector. First, digital payments promotion. First point is incentive schemes launched to boost RuPay debit card users and low value Bheem UPI P2M transactions. Second, payment infrastructure development fund. PIDF supports deployment of digital payment infrastructure in underserved regions. Next one is strengthen fraud prevention ecosystem through device binding, two-factor authentication, daily transaction limits,
and use case restrictions. Next, NPCI provides AI/ML based fraud monitoring solutions to all banks for real-time alert and suspicious transaction decline. Next, RBI and banks conduct nationwide awareness campaign via SMS, radio, and digital media on cyber security and safe digital payment practices. Okay, second one, strengthening cooperative social societies and microfinance sector. First point, RBI mandates all regulated entities to adopt a transparent board approved interest rate pricing policy for microfinance loans. Next, simplified definitions of microfinance loans and removal of earlier quantitative restrictions on NBFC MFIs, loan amount limits, minimum tenure norms, etc. Next, requirement of providing minimum 50% loans for income generation purposes has been removed to allow flexibility for medical education, educational and other essential credit needs. Last, reforms aims to enhance financial inclusion, ensure fair pricing and promote greater transparency in microfinance operations. सेम कंटेंट आपको मिलेगा हिंदी में सेम पॉइंट्स के साथ, जो उसमें अलग अलग पॉइंट्स के साथ आपको समझाया गया है, उन सारे ही पॉइंट्स के साथ आपको सेम कंटेंट हिंदी में मिलेगा। आप इस कंटेंट को देख सकते हैं। अब चलेंगे इस कंटेंट पे बेस्ड एमसीक्यूज जो हमारे बने हैं स्टेटमेंट बेस्ड उस पे, तो क्या है हमारे देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग स्टेप्स टेकन टू एनहांस फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू रेगुलेशंस ऑफ कोऑपरेटिव एंड एमएफआईज। थ्री यहाँ पे स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगी और पूछा गया है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट, रेगुलेशन नाउ अलाउ माइक्रोफाइनेंस लोन्स फॉर कंजम्पशन नीड्स लाइक मेडिकल एंड एजुकेशन। इट्स अ करेक्ट और इनकरेक्ट? इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, second, interest pricing for microfinance loans must be based on a more model approved by the Ministry of Finance. It's an incorrect statement. Third one is the definition of microfinance loans has been simplified by RBI. It's a correct statement. Right answer 1 and 3 only is the correct statement. आंसर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। द इंटरेस्ट रेट मॉडल इज बोर्ड अप्रूव्ड बाय द regulated entity itself, not by the Ministry of Finance. Okay, consumptions and non-income uses are now allowed and the definition has been simplified. Next question, consider the following statement regarding microfinance loans regulation. Three statements are here. Which statements are correct? So first statement, RBI mandates regulated entities to adopt a transparent board approved interest rate pricing policy. Is it correct? Yeah, it's a correct statement. Second, NBFC MFIs that is still subject to quantitative restrictions on loan tenure and loan amounts. Is it correct? No, it's incorrect. Last, the earlier requirement that 50% of loan must be for income generation activities has been removed. It's a correct statement. Right answer option D, 1 and 3 only is the correct statement. Quantity restrictions on NBFC's MFIs like limits on loan amount or tenure has been removed. The 50% income generation loan requirement has also been dispensed with. Okay, ये आपको आंसर एक्सप्लेन किया है कि व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। ओके, अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट पीआईबी करंट अफेयर्स पे, जो है अटल पेंशन योजना, एपीवाई। एपीवाई मीन्स अटल पेंशन योजना। फर्स्ट पॉइंट इज द अटल पेंशन योजना, द गवर्नमेंट ऑफ India's flagship social security scheme for unorganized sector workers has crossed a major milestone with 8.34 crore enrollments as on 31st of October 2025. Notably, women account for 48% of the total enrollments, indicating strong participation from female subscribers. Second point, launched on 9th of May 2015, APY provides a guaranteed pension to citizens aged 80 to 40 years who enroll using a saving banks or post office account. Pension benefits commence upon attaining 60 years, with large-scale disbursals expected from 2035 onwards. Next point,
To expand penetration across rural and remote regions, the government and PFRDA have undertaken targeted outreach measures, including first advertisement across print, electronics, and digital media. Second, APY brochures in 13 vernacular languages. Next, virtual training for banking correspondence, SSG and SRLM's bank Sakhis. Next, collaboration with Government of India Ministries, NCFE, NABARD, NRLM, and SRLM. Next, strengthening digital onboarding through APY, net banking, mobile apps, and bank portals. Next one, regular APY outreach events with banks, SLBC, and LDMS. Last one, Pan India financial inclusion campaigns for pension saturation. So, implementation is carried out through the Department of Post and a wide banking network, PSBs, private banks, RRBs, small finance banks, payment banks, and cooperative banks registered as point of presence APY, POP, APY. Okay. Static points on APY. First is launch year 2015, launched by Government of India under the Ministry of Finance. Implemented by Pension Fund Regulatory and Development Authority PFRDA. Target group unorganized sector workers. Eligibility 18 to 40 years. Pension start age 60 years. Type guaranteed pension scheme rupees 1000 to rupees 5000 per month option. Next, contribution mode, auto debit from saving account, exit after 60 years pension or earlier under specific conditions, objective, universal social security coverage. Okay. So अब इस पे केस स्टडी हम देख लेते हैं. केस स्टडी क्या है? केस स्टडी APY enrollment growth. It's a heading, case study APY enrollment growth. The Government of India recently announced that Atal Pension Yojana has crossed 8.34 crore gross enrollments as on 31st of October 2025. APY launched in 2015 aims to provide guaranteed pension benefits starting from the age of 60. Outreach efforts include advertisements, digital onboarding, eAPY, net banking, mobile apps, capacity building for banking correspondents, and financial inclusion campaigns. Women constitutes 48% of total enrollment. APY is implemented through DOP and banks registered as point of presence POP APY. Okay. So, इस पे based question, based on the case, which of the following best explains the significant rise in APY enrollments? Right answer, enhanced outreach, including vernacular brochures and digital onboarding. Option B is the right answer, because the case mentioned advertisement, 13 languages, brochures, capacity building, and digital channels as drivers. Okay. Next case study, APY enrollment growth. A woman aged 25 with a saving account want to join APY based on the case. Which condition makes her eligible? Okay. So which condition? APY is open to all citizens aged 80 to 40 with saving account. Option C is the right answer, because APY eligibility is 18 to 40 years plus saving accounts. ये है case study based. Okay. Next question is, consider the following statement regarding Atal Pension Yojana यानी APY के regarding कुछ statements है which are the correct. First, second, third. Okay. First statement, APY provides a guaranteed pension that begins after the subscribers attain 60 years of age is the correct statement. Second, only unorganized sector workers are allowed to enroll under APY is incorrect. Third one, APY enrollments have crossed 8.34 crore as of 31st of October 2025 is the correct statement. Right answer. What is the right answer? 1 and 3. Option B. 1 and 3 only is the correct. Okay. APY is open to all citizens aged 80 to 40 with a saving account, not restricted only to unorganized sector workers. It's an explanation of this answer. Next question. With reference to APY, consider the following statement. There are three statements, first, second, and third.
Which of the statement are correct? Okay, the scheme was launched on 9th of May 2015 is a correct. Second, female subscribers constitute 48% of the total APY enrollment as of October 2025 is a correct statement. Third one, pension payments under APY are expected to begin largely from 2035 onwards is a correct statement. 1, 2 and 3. 1, 2 and 3 statements are correct. Okay, next question. Regarding APY eligibility and benefits, consider the following statements. 3 statements are here. First statement, a citizen aged between 18 and 40 years can enroll in APY is a correct statement. Second, the pension amount under APY is market linked and fluctuates annually. It's an incorrect statement. Third one is APY uses auto debit from saving accounts for subscriber contribution is a correct statement. Right answer 1 and 3 only is the correct statement. APY offers a guaranteed pension rupees 1000 to rupees 5000, not a market linked pension. It's an explanation of this answer. Next question. Consider the following statement about institutions involved in APY. 3 statements are here. Which statements are correct? So, first statement, APY is regulated by PFRDL is a correct statement. Second, NABARD and NRLM supports awareness activities for APY is correct. Okay. Third one, only banks registered as POP APY can enroll subscribers is correct statement. 1, 2 and 3 statements are correct. Okay. Next, PIB Current Affairs is DFS. DFS organizes national seminar for presiding officers of debt recovery tribunals is a PIB Current Affairs. So इस पे based हम कुछ important points देख लेते हैं. The Department of Financial Services DFS, full form the Department of Financial Services, Ministry of Finance, conducted a 2-day residential national seminar for presiding officers of debt recovery tribunals DRTs at the National Judicial Academy NJA Bhopal on 1-2 December 2025. Second one, the seminar focused on strengthening adjudicatory capacity and enhancing jurisprudential understanding on DRTs through interactive session and open discussion. Third, key themes covered included first, genesis and overview of the Recovery of Debt and Bankruptcy Act 1993 RDB. Second, jurisdictional character and statutory framework of the RDB Act. Third, functioning and role of DRTs in recovery proceedings. Fourth one, case management techniques to improve efficiency and effectiveness. Next one, role of the adjudicating officers and the importance of online adjudications. Next, drafting of judgment and orders, art, craft and technique. Responsibilities of DRTs post SAFASI Act including procedural challenges issued fact by DRTs in disposal of recovery matters. Last one, participants appreciated the initiative and expressed satisfaction with the depth and the breadth of the subjects covered, acknowledging DFS efforts to build capacity within the DRT ecosystem. सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा हिंदी में, आप इसको देख सकते हैं सारे ही पॉइंट्स के साथ, अगर आप हिंदी में समझने और पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो आप देख सकते हैं. ठीक है, चलेंगे इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन पे. सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्टेंसी एक्ट RDB Act 1993 as discussed in the seminar. There are the 3 statements. Okay, so which statement is correct? First one is the seminar highlighted the genesis and statutory evolutions of the RDB Act is a correct statement. Second, the RDB Act governs jurisdictions and functioning of DRTs is a correct. Third one, the RDB Act was enacted to deal with insolvency resolutions for individual borrowers is incorrect. Right answer is 1 and 2 only statement is correct. Okay. Statement 3 is incorrect. The RDB Act deals with the recovery of debts due to banks' FIs, not insolvency of individuals alone. Okay. Next, हमारा PIB Current Affairs, RBI guidelines on customer service in regional languages. Okay. First point is
The Reserve Bank of India has issued comprehensive guidelines directing banks to strengthen customer service delivery through the effective use of regional languages. These guidelines aim to enhance inclusiveness, accessibility, and communication for customers across diverse linguistic regions. RBI has instructed all banks to adopt a board-approved policy on general branch management covering first point display of indicator boards at all counters, second availability of customer information booklets detailing all services and facilities, next mandatory availability of all printed materials, account opening forms, pay slips, passbooks, grievance redressal information in Hindi, English and the relevant regional languages. Next, provisions of multilingual customer support through contact centers and digital channels. Next, the Department of Financial Services DFS has further advised public sector banks PSBs to strictly comply with RBI regional language guidelines. RBI has reiterated to all scheduled commercial banks that all customer communication must be issued in a trilingual format, Hindi plus English plus regional language. Next, to strengthen linguistic accessibility, the Indian Bank Association IBA has advised PSB to adopt policies for recruiting local bank officers LBOs, particularly in rural and semi-urban areas. Additionally, customer service associates CSAs in PSBs are now required to clear local language proficiency test LPT for the official language of the state/UT where they will be posted. This initiative ensures a smooth local language communication and enhanced frontline customer service across banking outlets. सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा हिंदी में, आप देख सकते हैं इन सभी पॉइंट्स के साथ. ओके, ये पीआईबी करंट अफेयर्स है, इस पे सेम कंटेंट आपको हिंदी में ये दिया गया है. नेक्स्ट इस पे चलेंगे क्वेश्चन पे. बेस्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा फर्स्ट. Consider the following statement regarding RBI guidelines on customer service in regional languages. First statement, second and third, which of the above is a correct statement is the asking question. Okay. So first statement, bank must issue all customer communication strictly in Hindi and English language is a incorrect answer. Incorrect statement. Okay. Second one, banks are required to provide printed materials such as passbook and account opening forms in Hindi, English and the concerned regional language is the correct. Third one, every bank must have a board approved policy for the general management of branches including display of indicator boards is the correct. Right answer. 2 and 3 only is the correct statement. Statement 1 is wrong because communication must be trilingual Hindi, English and regional language. Next question based on the content. Based on the news, consider the following regarding customer support mechanism. The three statements are here. Which statement are correct? So, first statements, banks are multilingual contact centers to offer assistance in regional languages. It's a correct statement. Second one, RBI mandates that digital channels must be available in at least 2 regional language per state is incorrect. Third one is RBI emphasizes the role of digital channels in providing service support in regional languages is the correct statement. So 1 and 3 only. Option D is the right answer. Statement 2 is incorrect. No minimum 2 language per state requirement exists. Okay. No minimum 2 languages per state requirement exist. Next case study. It's a case study and इस पे बेस हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. A scheduled commercial bank receives a notification from RBI reiterating that all customer communication must be issued in a trilingual format, Hindi, English and the concerned regional language. The bank also reviews existing customer materials such as passbook, account opening forms and pay slips which are currently available only in English and Hindi. The bank contact center, however, already supports 14 regional languages. Meanwhile, the Department of Financial Services DFS reminds public sector banks to comply with regional language uses guidelines. The bank also notes that RBI requires a board-approved branch management policy covering customer services, standard display boards and availability of service booklets. Okay.
सो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, विच immediate compliance action should be the bank take first? What is the right answer? Upgrade passbook and forms to trilingual format. Option A is the right answer. RBI mandates trilingual printed material for customer. This is a direct compliance requirement. Next question, which of the following shows correct alignment with RBI directions? Option C, ensuring indicator boards are displayed in the regional language. Option C is the right answer of this question. Next, which factor most strong supports RBI trilingual communication guidelines? Right answer, enhanced accessibility for customers in their local language. Option C is the right answer. Next is the केस स्टडी. ओके, नेक्स्ट केस स्टडी रहेगा रिक्रूटमेंट एंड लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. A public sector bank aims to strengthen customer service in rural and semi-urban branches. Following IBA's advisory, the bank decided to formulate a policy for recruiting local bank officers (LBO) during the recruitment of customer service associates (CSAs). The bank introduced the local language proficiency test (LPT) for the official language of the state where the staff will be posted. The bank believes this will improve communication with local customers and increase service quality at the front end. Okay, question is, which of the following objectives is most aligned with the introductions of LPT for CSAs? Right answer, to ensure seamless communication in the local language. Option B is the right answer of this question. Next, PIB Current Affairs. Government launches credit assessments model CAM for MSMEs. Okay, इस पे based important points. The Government of India has launched a credit assessment model CAM to strengthen digitally driven loan appraisal for MSMEs, micro, small and medium enterprises. The model uses digitally sourced and verifiable data from the financial ecosystem to create automated loan appraisals journeys, enabling objective decision making for loan application and model based credit limit assessment for both existing to bank ETB and new to bank and TB MSME borrowers. Next point, alongside the government, RBI and NPCI continue to promote digital payments through initiatives such as incentive schemes to promote RuPay debit cards and low value Bheem UPI P2M transactions. Next, Payment Infrastructure Development Fund PIDF to deploy POS terminals and QR codes in underserved regions. For next point is, further the PM SVANidhi scheme launched on 1st of June 2020 has been extended till 31st of March 2030, implemented joined by MOHUA and the Department of Financial Services. The scheme supports street vendors through collateral-free loans enhanced to 15,000 to rupees 15,000 rupees, 25,000 rupees and 50,000 rupees in 3 tranches. The scheme now also features a UPI linked RuPay credit card with a rupees 30,000 credit limit and cashback incentives for digital ट्रांजेक्शन. सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा, सारे ही पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे हिंदी में जिन्हें आप देख सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन रहेगा इस पे स्टेटमेंट बेस्ड. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रेडिट असेसमेंट मॉडल CAM फॉर MSME. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर हियर. सो आस्किंग व्हिच स्टेटमेंट इज अबव आर करेक्ट. ओके, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? फर्स्ट, CAM uses digitally fetched and verifiable data to enable automated MSME loan appraisal is a correct. Okay, second one, CM provides a model based credit limit assessment only for existing to bank ETB customer and excludes new to bank in NTB MSMEs. It's a incorrect. Third one is, CM aims to improve objectivity and reduce manual intervention in MSME loan decision making is a correct statement. 1 and 3 only. Option A is the right answer. Statement 2 is incorrect. CAM covered both ETB and NTB MSMEs. Okay, ये है इसका आंसर. Next question. Consider the following statement about the PM SVANidhi scheme. So there are 3 statements. Which one is correct? The scheme was launched on 1st of June 2020, is now extended till 31st of March 2030.
is a correct statement. Second one, the maximum loan amount available under the scheme after enhancement is rupees 1 lakh. What is the right? It's a incorrect statement. Because loans are available tranches of rupees 15,000, rupees 25,000, rupees 50,000. Okay. The third one is the scheme includes a UPI linked RuPay credit card with a credit limit of rupees 30,000 is the correct statement. 1 and 3 only is the right answer. Statement 2 is incorrect because loans are available of tranches of rupees 15,000, 25,000 and 50,000. Next PIB Current Affairs Startup Common Application Journey launched on Jan Samarth portal. First point is the Department of Financial Services DFS Ministry of Finance has launched the Startup Common Application Journey on the Jan Samarth portal during the Public Sector Banks Review meeting in New Delhi, developed by the Indian Bank Association IB in collaboration with PSB Alliance. The feature provides a single digital platform for startups to access credit across all public sector banks. Next point is the unified platform enables startups to apply for loan, compare banks offers, and track applications seamlessly through one integrated digital journey. Backed by a model loan scheme, the initiative facilitates loans of up to rupees 20 crore under the credit guarantee schemes for startups CGSS administered by NCGTC under the DPIIT. Next point is to ensure faster processing and transparency. The portal integrates multiple data sources including PAN, GST, Udyam registration, ITRs and credit bureau records. The system also provides special interest concessions for women entrepreneurs, promoting greater inclusivity in the startup credit ecosystem. Last point is the launch marks a major step towards building a collaborative technology-driven financial ecosystem for India's startup sector and aligned with the गवर्नमेंट ब्रॉडर विजन ऑफ विकसित भारत 2047. सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा हिंदी में विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो क्वेश्चन देख लेते हैं एमसीक्यूज स्टेटमेंट बेस्ड. With reference to the Jan Samarth portal startup common application journey, consider the following statement. First, second, and third statements are here. Which statements are correct? So, first statement: the portal provides a unified platform where startups can apply for loan, compare offers, and track their application. Is a correct statement. Second, the platform is backed by a model loan scheme offering loans up to rupees 20 crore. Is a correct statement. Third one is the loans are guaranteed under the credit guarantee schemes for startups CGSS, which is implemented by SIDB. Is a incorrect statement. Right answer 1 and 2 only is the correct statement. Statement 3 is incorrect because CGSS is managed by NCGTC, not SIDB. Okay. Next question. With reference to the broader objective of the startup common application journey, consider the following statements are here. First, second, and third statement. Which statements is a correct? Okay. First, the initiative reinforces the government's vision of Viksit Bharat 2047 is a correct statement. Second one, the launch aims to create a collaborative and technology-driven ecosystem for startups is the correct statement. Third one is the journey is meant to replace DPIIT Startups India portal completely is the incorrect statement. Right answer 1 and 2 only is the correct statement. Statement 3 is incorrect because there is no indication that it replaces Startup India. Next PIB Current Affairs is Credit Guarantee Scheme for Exporters CGSE. Some important points are here. The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the Credit Guarantee Scheme for Exporters CGSE to provide 100% credit guarantee coverage through the National Credit Guarantee Trustee Company NCGTC. The scheme enables collateral-free additional credit of up to rupees 20,000 crore to eligible exporters, including MSMEs. The scheme will be implemented by the Department of Financial Services DFS through NCGTC. A management committee chaired by the Secretary DFS will monitor implementation and progress. The scheme allows members lending institutions MLIs to extend enhanced guaranteed credit supports and exporters. Next, the CGSE is expected to significantly strengthen the global competitiveness of Indian exporters by improving liquidity, supporting smooth business operations and
facilitating market diversification, especially into new and emerging export destinations. The scheme contributes to India's broader goals of reaching $1 trillion in exports and advancing Atmanirbhar Bharat. Next point, exports account for nearly 21% of India's GDP financial year 24-25 and support over 45 million jobs, with MSME contributing nearly 45% of total exports. Strengthening financial support and to exporters is essential for maintaining export momentum, ensuring macroeconomic stability and enabling expansion into new markets. सेम पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे हिंदी में, आप देख सकते हैं सारे ही पॉइंट्स आपको हिंदी में दिए गए हैं, जैसे सुटेबल हो आप वैसे पढ़ सकते हैं इसको लाइन बाय लाइन। कंटेंट को जरूर पढ़ना है लाइन बाय लाइन। चलेंगे इस पे बेस्ड एमसीक्यूज पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द credit guarantee scheme for exporters CGSE. First, second, third statement are here. Which statement is correct? Okay. First statement, CGSE provides 100% credit guarantee coverage through NCGTC. Okay, it's a correct statement. Second one is the scheme offers collateral-free credit support up to rupees 20,000 crore to eligible exporters. Is a correct statement. Third one is the scheme is implemented directly by the Reserve Bank of India. It's an incorrect statement because the statement 3 is incorrect. Implementation is through DFS, NCDC, not NCGTC, not RBI. So it's a incorrect statement. Right answer is 1 and 2 only is the correct statement. Next question. Consider the following statement about India's export sector as mentioned in the background of CGSE. First, second and third statements are here. Okay. First statement, exports account for nearly 21% of India's GDP in financial year 24-25 is the correct statement. Second one is export-oriented industry employ over 45 million people directly and indirectly is a correct statement. Third one is MSME contribute nearly 25% of India's total export is the incorrect statement. Right answer is 1 and 2 only is the correct statement. Statement 3 is incorrect because MSME contributes nearly 45% of total exports. ठीक है, तो कंप्लीट कर लिया है हमने अपना PIB लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का पार्ट 5। ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा लास्ट 6 मंथ का PIB करंट अफेयर्स विद इंपॉर्टेंट कंटेंट्स विद इंपॉर्टेंट MCQs, स्टेटमेंट बेस्ड MCQs सभी के साथ हमने कवर किया है। क्लास अच्छी लगे तो एक हाइप जरूर दीजिए, और अगर आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी PDF को परचेज करने के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट कुछ भी क्वेरीज हो आपके तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने लास्ट 11 मंथ का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लास नहीं देखा है, जाके जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। जनवरी टू नवंबर लास्ट 11 मंथ विद 14 टॉपिक, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको PDF मिल जाएगा अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो। विद कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और लास्ट 11 मंथ का RBI सर्कुलर क्लास नहीं देखा है, ये क्लास भी आप जाके देख सकते हैं। जनवरी टू नवंबर लास्ट 11 मंथ RBI सर्कुलर्स इन MCQs फॉर्म विद इंपॉर्टेंट कंटेंट इन इंग्लिश एंड हिंदी। उसका PDF भी आप परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी PDF को परचेस करने के रिगार्डिंग। ठीक है, कुछ भी डाउट्स क्वेरीज हैं आप लोग पूछ सकते हैं, और आपको हर PDF में कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। तो क्लास अच्छी लगे तो हाइप जरूर दीजिए, और अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताइए। आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको दिए गए हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।